Hello everyone, welcome to my channel HomeoCare. Today we will learn about rubrics which are related to sadness. So first, sadness. Sadness is the feeling of being unhappy, especially because something bad has happened or something has happened that you do not like. हिंदी में बोलते हैं उदासी. Sadness is associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, helplessness, disappointment, etc. An individual experiencing sadness may become quiet or lethargic, means sluggish or lazy, and there is a lack of energy, and they withdraw themselves from others. Like any other emotion, it is not a constant state. If we see the subrubrics, there is sadness with acne, acute sadness, sadness in afternoon, air in open, alcoholics in, alone, alternating with. In that also, there are so many subrubrics are there. Like sadness alternating with affection, anger, antics playing, buoyancy, cheerfulness, etc. Second one is grief. Grief is intense sorrow or extreme sadness caused by someone's death. हिंदी में बोलते हैं शोक. तो जब सैडनेस बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तब उसे ग्रीफ कहते हैं. तो इसीलिए वो ऐसी सिचुएशन में होता है जो बहुत एक्सट्रीम होती है, लाइक डेथ ऑफ समवन और एनी डेथ लाइक सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ रिलेशन, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लाइक डेथ ऑफ रिलेशनशिप, डेथ ऑफ आवर ड्रीम्स, आवर एम्बिशन, एनी टर्मिनल डायग्नोसिस, great financial loss, etc. Now the patient feel numb and their daily life is disturbed. They are unable to carry on with their regular duties. But grief and sadness totally depends on how patient reacts to the situation, and it does not depend on situation itself. For example, if there is death in the family, all family member will react differently. Some feel intense grief or others may just feel sad about it. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम केस लेते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट में मैंने देखा है कि उनके लाइफ में जो भी ग्रीफ होता है वो कितना भी पुराना हो, हम जब उसको टच करते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं और वो थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोल नहीं पाती. तो ग्रीफ के सब रूब्रिक्स में है आफ्टरनून, देन एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, देन अल्टरनेटिंग विथ बॉइस्टरस, एक्सेट्रा. सो इन ग्रीफ, इग्नेशिया इज फॉर 4 marks. Other important remedies are anthracinum, aurum, causticum, natrum muriaticum, pulsatilla, rustox, staphysagria, and symphytum. We will see one example which will show how meaning of rubric is important. The rubric grief money from losing remedies are aurum, calcarea flor, mesoreum, and soranum. And sadness money losing after. There is arnica, arsenic, aurum, mesoreum, and soranum. So you can see there is a little difference in set of remedies. Then third one is sorrow. Sorrow is a feeling of deep distress caused by loss, disappointment, or other misfortune suffered by oneself or other. हिंदी में बोलते हैं दुख. So there is a rubric sorrowful in repertory. In that cross reference of grief and sadness is given. Fourth one is melancholy. Melancholy is a feeling of pensive sadness, typically with no obvious cause. Sadness that lasts for a long period of time, often without any obvious reason. Pensive का मतलब है thinking deeply or seriously about often of sad or melancholy things. Expressing deep thoughtfulness, often with some sadness. So in repertory for melancholy, cross reference of despair, grief, and sadness is given. Despair is complete loss or absence of hope. Then fifth rubric is brooding. Brooding is engaged in or showing deep thought about something that makes one sad, angry, or worried for a long time. मतलब ये पेशेंट अपने दुख के बारे में एक जगह बैठकर बस ये सोचते रहते हैं, वो अपने दुख को कम नहीं होने देते और वो अपने आप को रोक नहीं पाते सोचने से. तो ब्रूडिंग में भी इग्नेशिया एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है. देन सिक्स वन इज इनकंसोलेबल. इनकंसोलेबल इज नॉट एबल टू बी कंफर्टेड और एलिविएटेड. नो वन कैन लेसन देयर ग्रीफ. हिंदी में कंसोल का मीनिंग है सांत्वना देना. लेकिन ये पेशेंट जब दुख में होते हैं तो इन्हें कितना भी हम समझाएं, कितना भी उन्हें कंसोल करें,
इनका दुख कम नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं करते उस दुख को। इसमें भी इग्नेशिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सैडनेस और ग्रीफ से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाली रेमेडीज़ है वो है इग्नेशिया, कॉस्टिकम, नैट्रम म्यूरेटिकम, वेराइट्रम एंड कैमोमिला।